आज का जो टॉपिक है टफल में वो हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल लैंग्वेजेस से। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर जो है आपके पास, पहले ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रामर? तो टॉपिक नोट करें, डेफिनेशन ऑफ अ ग्रामर। डेफिनेशन वन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ग्रामर में अ पार्स स्ट्रक्चर ग्रामर और सिंपली अ ग्रामर। पार्स स्ट्रक्चर ग्रामर बोले या सिंपल ग्रामर बोले, is four tuples vn sigma p s where vn is a finite non-empty non-empty set whose elements are called variables. The second point is sigma is a finite non-empty set whose elements are called terminals. Terminals. Next, we don't have anything is common in Vn and sigma. So Vn intersection sigma is equal to phi. Fourth, P or S. So first we discuss S. S is a special variable that is an element of Vn called the start symbol, and the last one P is a set whose elements are alpha produce beta, where alpha and beta are strings on Vn union sigma. Alpha has at least one symbol from Vn
The elements of P are called production rules or rewriting rules. रूल्स। तो ये तो एक की आपके पास डेफिनेशंस पूरी ग्रामर की। तो एक ग्रामर में आपके पास फोर टपल्स हैं, वी एन सिग्मा पी और एस। तो वी एन क्या था आपके पास, सेट ऑफ द वेरिएबल्स, और सिग्मा आपके पास सेट ऑफ टर्नल्स, पी प्रोडक्शंस का सेट है पूरा, जिनको हम प्रोडक्शन रूल्स और रीराइटिंग रूल्स भी कहते हैं। एस एक वेरिएबल ही है जो स्पेशल सिंबल है, उसका स्टार्टिंग सिंबल कहलाता है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर इसमें, कि जो हमारे पास यहाँ कुछ डेरिवेशंस होंगे और लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय द ग्रामर्स। तो टॉपिक का नेम है हमारा डेरिवेशंस एंड एंड द लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय अ ग्रामर। अ ग्रामर, तो यहाँ एक डेफिनेशन शुरू करें, जिसे हम डेफिनेशन टू बोल रहे हैं। डेफिनेशन टू, डेफिनेशन टू में लिखें, इफ अल्फा एंड बीटा is a if alpha and beta is of production, alpha produce beta in a grammar capital G, and gamma del are any two strings on Vn union sigma, then we say that gamma alpha delta directly drive drives gamma beta delta in G. We write this as gamma alpha del generate gamma beta del. This process is called one step derivation. In particular, if alpha produce beta is a production, then we write alpha generate beta. नेक्स्ट डेफिनेशन 3 पर हम आ जाते हैं। डेफिनेशन 3 में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर strings on on Vn union sigma,
तो अल्फा और बीटा स्ट्रिंग्स है वीएन यूनियन सिग्मा पर, देन वी से दैट अल्फा ड्राइव्स बीटा if alpha generate beta star. Here the symbol, this arrow G और star, ठीक है, denotes the reflexive transitive closure of the relation G in Vn union sigma star. Next definition. Definition 4. The language generated by a grammar capital G denoted by LG by LG, जो भी लैंग्वेज होगी that is denoted by LG is defined defined as W belongs to sigma star S produce G star W. The elements of LG are called sentences. तो सेंटेंस क्या, ये क्लियर हो चुका है यहाँ। अगली डेफिनेशन हम आते हैं डेफिनेशन 5 पर। इफ S produce derivation है, S derives alpha, then alpha is called a sentential form, इसको sentential form भी कहते हैं। We can note that the elements of LG are sentential forms but not vice versa. एक डेफिनेशन और लिखते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे अगले हम लेक्चर में। एक लास्ट डेफिनेशन यहाँ, डेफिनेशन 6। G1 and G2 are equivalent if LG is equal to LG1 is equal to LG2। तो दो हमारे पास ग्रामर्स हैं that these grammars can be equivalent जब उनसे जनरेटेड आपके पास लैंग्वेज भी इक्विवेलेंट होंगी। तो ये ग्रामर भी आपके पास कैसी होंगी, इक्विवेलेंट।